जो अच्छे अच्छे पदों पे पहुंचे हैं उन्हें भी डॉक्टर बाबा साहब का नाम लेने में, बोधिसत्व बाबा साहब का नाम लेने में, मुझे ऐसा लगता है ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं संकोच महसूस होता है। लेकिन अमेरिका के बच्चे गर्व से जय भीम कर रहे हैं। आप जो वीडियो देखने वाले हैं उसमें आप देखेंगे कि अमेरिका का एक सरकारी स्कूल है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बाबा साहब के बारे में जान रहे हैं और बाबा साहब को जानने के बाद वो किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, सब आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन जिनके कारण वो बाबा साहब के बारे में जाने हैं, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने कैसे बाबा साहब को इंट्रोड्यूस कराया वहाँ के बच्चों से, वहाँ के टीचर्स से? एक्चुअली में क्या होता कि टीचर जब वहाँ पे एक क्लास चल रही थी जिसमें एस्ट्रोनॉट जैसे मून पे लैंड किया था ना, वो टॉपिक था, उसका प्रेजेंटेशन करना का था। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था वो क्लास में 2 वीक्स के लिए, कि उनको बताने के लिए। तो जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं अकेली इंडियन हूँ वहाँ पे, सारे वाइट टीचर्स हैं और बच्चे हैं वाइट अमेरिकन, तो और कुछ हाँ दूसरे भी हैं, लेकिन इंडियन जो है मैं ही हूँ एशियन में। तो उन्होंने कहा कि आपका इंडिया का कल्चर कैसे है, लाइक आप कैसे विश करते हैं इंडिया में, किसी को मिलते कैसे ग्रीट करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि हम लोग किसी को भी देखते हैं तो हम लोग ऐसा जय भीम कहते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि, और बच्चे लोग मुझे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें भी जय भीम कहना है, तो वो बराबर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे लोग, टीचर ने कहा आप बोर्ड में लिखो ताकि हम लोग एवरीडे वी विल विश यू जय भीम। ओके। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया, तो वो लोग उसको पढ़ पढ़ के मुझे जय भीम कहने लगे। और दूसरा चीज, एक चीज था नोटिस किया मैंने कि वो मुझे लाइन से बना करके जाते हैं बाहर, जैसे डाइनिंग रूम में जा रहे हैं या प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, तो किधर भी जाते हैं तो वो लोग मुझे पूरा लाइन का लाइन ऐसा झुक करके जय भीम कहते हैं, हाथ जोड़ करके। तो आई वॉज लाइक सरप्राइज कि इंडिया में कोई भी कहेगा ना तो वो सीधा जय भीम कहता है। आई डोंट थिंक कि सभी लोग हाथ जोड़ के या झुक करके किसी को हम लोग ऐसा विश करते होंगे। लेकिन ये इनके दिमाग में, बच्चों में कैसे आया, इतना रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक ही उनके इसमें आया है। तो फ्रॉम द डे वन वो मुझे ऐसा लाइक सा बाव करके ऐसे हाथ जोड़ के जय भीम कहते हैं। अच्छा। तो हाँ जी। ये है कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे आए कि बच्चों के बीच में बाबा साहब की आप बात रखें, या जो आपने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था उसके बारे में आइडिया कैसे आया? तो कुछ कोइंसिडेंस ऐसे हुए कि मैंने तो सोचा नहीं था कि उस क्लास में या स्कूल में, कि मैं अभी जनवरी में आई हूँ स्कूल को ज्वाइन किया मैंने, और मैं इतना कुछ कर पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ देयर इज अ विश, देयर इज अ वर्क, देयर इज अ विश। तो ऐसा कुछ था मन में, तो था कि कुछ करना है, बट ये नहीं पता था कि कैसे वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इस समय ऐसे हुआ कि टीचर ने कहा कि आपका ना कल्चर कुछ क्या है, इंडिया का ट्रेडिशन क्या है वो बताइए। तो तो मैंने कहा वो कैसे बताओ, बोलती कि हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन बना लो करके, और देन यू कैन एक्सप्लेन अस। सो आई सेड ओके, देन आई विल शो यू द रियल इंडिया, जो रियल ट्रेडिशन है, द ओरिजिनल इंडिया एंड ओरिजिनल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। सो उस वो बहुत खुश हुई। और फिर जब मैंने उनको बताया बाबा साहब के बारे में, तो शी वाज लिटरली इन टीयर्स। तो उन्होंने ऐसे कहा। फिर मैंने बाकी जो अपने स्टाफ मेंबर्स है, रिसेप्शनिस्ट वगैरह, सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल है, उन सबको बताया। तो उन लोगों ने बाबा साहब का नाम पढ़ के फिर जैसे ही सुना तो बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी बनाओ ये प्रेजेंटेशन और हम लोगों के साथ शेयर करो। लाइक वो इतने एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने प्रेजेंटेशन बनाया उनका, और उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, काफी सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारा कुछ किया मैंने। तो उसको बना करके फिर मैंने है ये किया। और जब हमने जय भीम बोलना शुरू किया, उस दिन मेरा उपोषण था, फर्स्ट डे जब मैं उनके क्लास में गई थी। अच्छा, और उस औसत। दिन हाँ। उपोषण था अष्टमी का। और ओके। फिर मेरे को 1 वीक का टाइम मिला। और जिस दिन मैंने प्रेजेंटेशन बनाया तो मुझे एक दिन पहले करने का था, मंडे को, लेकिन मेरा रेडी नहीं हो पाया। और वो मेरा लास्ट डे था उस क्लास में, मंडे का। लेकिन फिर ट्यूसडे को क्या हुआ कि मुझे फिर से जाना पड़ा वहां पे, और ट्यूसडे को मेरा माघ पूजा का उपोषण था। और उसी दिन देख ऐसे कोइंसिडेंस हुआ कि मैं इतने दिन से ट्राई कर रही थी, नहीं कर पाई, प्रेजेंटेशन हो ही नहीं पा रहा था पूरा, क्योंकि उसमें मेरे बच्चे हैं राहुल श्यामपुर और श्रृंगार श्यामपुर, और लोगों ने मेरे को कोऑपरेट किया और उन्होंने मेरे को पूरा हेल्प किया रिसर्च करने में और ये बनाने में। तो थोड़ा सा टाइम लगा। तो हमने माघ पूर्णिमा के दिन ही ये प्रेजेंटेशन वहां पे किया। और जब मैंने उनको बताया कि हम अब लोग
हाउ द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, हमने उस दिन से शुरू किया है, ये मून का बात से शुरू किया है प्रेजेंटेशन तुम्हारा। और कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हुआ कि बाबा साहब बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो प्रेजेंटेशन है अमेरिकन बच्चों के इसमें लाना, सबसे पहले उन्होंने अभी तक सुना नहीं था उनके बारे में, वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ये तो बहुत ये बड़ी बात है, और आश्चर्य एक की वो बात। माघ पूर्णिमा जी। के दिन। क्या टीचर्स और बच्चों को पहले से बाबा साहब के बारे में पता था? नहीं, उन्होंने कभी नहीं सुना था ये नाम। उनको अच्छा। टीचर ने कहा कि अच्छा मैं हमने सुना है, क्योंकि इंडिया का कभी भी नाम आता है तो उसमें उन लोगों को दो ही चीजें याद आती हैं, उन्होंने कहा। एक तो बुद्धा, सबको पता है बुद्धा कौन है, अच्छा। तो द लैंड ऑफ बुद्धा। तो हाँ। इंडिया को जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है हर कोई जो है लैंड ऑफ बुद्धा के नाम से जानते हैं। और अच्छा। सेकेंड चीज है वहां पे बड़ी प्रोमिनेंट है, लाइक यू नो एवरीबडी नोज कि इंडिया में जो बहुत गंदा कल्चर है, दैट्स कैस्ट सिस्टम। So she said, I have heard about caste system and it's very really bad, like awful, ऐसे बोली उसने। तो मैंने कहा yes, I'm talking about that. And then she was so excited कि नहीं, इस चीज को दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इक्वालिटी क्या होती है ये करके, और कैसे हमको एक दूसरे के साथ मिल करके रहने का है, और कैसे रिस्पेक्ट करने का है दूसरे को, उनकी डिग्निटी क्या होती है उसका रिस्पेक्ट करने का है। तो परंतु उनको ये नहीं पता था कि बाबा साहब ने लेकर के आए हैं ये इक्वालिटी इंडिया में, क्योंकि उनके नाम को तो हर जगह पूरी तरह से दबाया जा रहा है ना अभी। जी जी। तो इसलिए उनको कुछ नहीं मालूम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, ना बच्चों ने और उन्होंने। और टीचर ने तो फिर भी पढ़ा था कि क्या सिस्टम होता है, लेकिन बच्चे जो थे उनको कुछ भी आइडिया नहीं था इस चीज का कि मैं क्या प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। उनको एक ही मालूम है, जय भीम। और वो समझते हैं कि जब मैंने बाबा साहब का पिक्चर दिखाया तो वो बोलते हैं कि मुझे जय भीम के साथ पिक्चर लेना है। दैट मीन्स दे थिंक दैट कि वो डॉक्टर अम्बेडकर नहीं जानते, वो अच्छा, समझते हैं कि ये जो खड़े हैं यहाँ पे जो वो जय भीम है। बैठे हैं वो जय भीम है। तो आई आई लव जय भीम ऐसा कहते हैं, तो वो आई लव डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा नहीं कहते वो लोग। ओके। तो एक ये नया ट्रेडिशन निकल गया है अमेरिका में, बच्चों ने कितना शानदार किया है कि एक तो जय भीम को उन्होंने इंडिया का नेशनल ग्रीटिंग टर्म डिक्लेयर कर दिया। आई मीन यू कैन से कि कोई भी इंडियन को देखते हैं वो लोग तो कहते हैं जय भीम, ये अच्छा, बहुत कोई भी बड़ी इंडियन को देखते हैं जय भीम बात को? है। तो वो बोलते तो वो इंडियन है, ओके तो जय भीम कहना है। उनको ये पता है कि अच्छा कोई दिखता है तो इंडिया का कल्चर है तो उसको जय भीम कहना है। बच्चों ने आपसे पूछा कि जय भीम का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे वहाँ पर बड़े ही आदर पूर्वक बाबा साहब को रिस्पेक्ट दे रहे थे और जय भीम भी कर रहे थे। मुझे जय भीम का मतलब बच्चों ने तो नहीं पूछा, और लोगों ने टीचर ने एक बोला था कि ये जय भीम क्या है, तो मैंने बताया कि बहुत एंशिएंट टर्म है, हम लोग पाली में जय कहते हैं। तो इट्स टिपिकली जब जय भीम हम कहते हैं, जो बाबा साहब थे उस समय ऐसा आया था कि स्ट्रेंथ इन इक्वालिटी। हम्म। अगर आप में समानता नहीं है, एक दूसरे के लिए नहीं जानते, तो आप में स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकती। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जय भीम का मीनिंग है स्ट्रेंथ एंड इक्वालिटी। लाइक यू नो अगर आपको मजबूत बनने का है या कुछ ऐसा, जैसे कहते हैं ना जोश आ जाता है क्योंकि आप जय भीम जैसा ही बोलेंगे, तो यू गेट गूज बम्स, लाइक यू नो एकदम से एक्साइटमेंट आ जाती है, और जो सोया है उसको भी वो हो जाता है, लाइक यू अपने नो आप में आत्मसम्मान, स्वाभिमान ऑफ कोर्स महसूस। कॉन्फिडेंस है, और हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसे कर क्या कर सकती हूँ, लाइक ये आता है। तो मैंने उन्हें बताया कि स्ट्रेंथ एंड इक्वालिटी इज जय भीम। शी वाज सो हैप्पी। तो मैं उन्होंने टीचर ने उनको कहा कि जब भी मिस अरुणा उनको आप जय भीम ही कहने का है। तो वो लोग जहां भी जाते हैं, मैंने बताया लाइन बना करके जाएंगे, वो जय भीम कहते हैं। और वो लोग इतने खुश हैं कि मैं अपनी क्लासरूम में होती हूँ, और अगर वो बच्चे कहीं लाइब्रेरी में जा रहे हो एंड दे विल पास थ्रू माई क्लास, सो वो क्लास में आते हैं स्पेशली मुझे जय भीम कहने के लिए। अच्छा, क्लास में आपसे जय भीम कहने? तो हाँ, तो आई हैव नो आइडिया, लाइक सारे इतने सारे टीचर्स हैं, सभी को तो जाने के लिए विश नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्या ऐसा कनेक्शन हो गया है जय भीम से कि वो आते हैं, वो करते हैं। और फिर बाहर भी ऐसे ही, लंच रूम में भी ऐसे ही करेंगे, डाइनिंग रूम में। तो दूसरे बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक यू नो कैसे लगता है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है दूसरे अच्छा। स्टूडेंट्स को। ये एक ही क्लास कहती है, तो उन्हें कहते हैं कि डोंट आस्क क्वेश्चन, जस्ट जय भीम। ओके। हाँ, वो लोग ऐसे कहते, तो वो दूसरे बच्चे भी आजकल जय भीम करने लगे। तो मेरे पूरे स्कूल में ऐसा हो गया है कि पूरी की पूरी लाइन 30 स्टूडेंट्स में वो जय भीम कह रहे हैं, तो कुछ तो हो रहा है स्कूल में जय भीम का। मतलब 30 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद वो बच्चे इतने बाबा साहब से प्यार करने लगे कि वो तस्वीर के बिल्कुल नीचे बैठकर वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए इच्छुक हो गए।
हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ, जय भीम तो वो पहले से कहते थे, लास्ट 10 डेज तक वो लोग मुझे जय भीम कह रहे थे। लेकिन जब मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया लास्ट डे में, हम्म, तब उनको पता चला कि ये कोई है जिनको हम जय भीम कहते हैं। पहले उनको तो ये था कि इट्स अ टर्म ऑफ विशिंग समवन और लाइक रिस्पेक्टिंग समबडी। लेकिन जब उन्होंने देखा बाबा साहब का बारे में, तो वो इतने स्टैंड स्टिल हो गए थे क्लास में। मतलब अच्छा। इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे वो देखने में कि किसी ने कोई शोर नहीं किया, कोई इधर उधर मूव नहीं किया, और वो पूरा अच्छी तरह से सुन रहे थे और पढ़ रहे थे वहां पे बोर्ड पे प्रेजेंटेशन को। और दूसरा, जब वो हो गया उसके बाद में उनको लगा कि ये क्या है करके, लाइक वो आप देखेंगे उनका रिएक्शन बहुत सैड है वो देखने मतलब के बाद। आश्चर्यचकित हो गए थे वो। हाँ, कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनको पता ही नहीं था ना क्या सिस्टम क्या होती है, कोई कितना डिफिकल्ट लाइफ किसी के लिए, कोई कोई व्यक्ति किसी के लिए बना सकता है इतना हम्म, लाइफ उसका। हम्म, इतना सब कुछ देख करके ऐसे उनको लगा। और फिर वो जो थे, उनको इतना रिस्पेक्ट आ गया बाबा साहब के बारे में। 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स, ट्वेंटी हम्म, फाइव मिनट्स यू कैन से दैट, हम्म, उनके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आने लगे, बिकॉज अच्छा। दे ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उनको आदत है, उनको किसी के मन में ऐसे ब्लैंकेटेड कर दिया, तुम्हारा माइंड को ब्लैंकेटेड कर देते हैं ना जैसे इंडिया में, हम्म, यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग, कुछ अच्छा भी नहीं सोच सकते आप। तो हम्म, वो यहाँ के बच्चे वैसे नहीं है, अगर कुछ गलत है तो उसके लिए वो आवाज उठाएंगे, बोलेंगे, क्वेश्चन करते हैं। तो आपने देखियो कितना हैंड रेज किया। तो आप सोच सकते हैं कि विद इन 5 मिनट्स का जो फर्स्ट दो दो स्लाइड्स उन्होंने देखा, वही उन्होंने हैंड हैंड रेज किया रेस्ट कि करना चालू कर दिया। सबके मन में इतने क्वेश्चंस थे। अब उनका कोर्स तो नहीं है ये, उनको क्या लेने था, बट उनको सोचे कितनी इंसानियत है उतने छोटे छोटे बच्चों में कि उनको इतना टच ही फील किया उन्होंने, जो हम लोगों के साथ हुआ है उसके लिए। तो वो अच्छा। बात, एक ये जी। इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर में। और दूसरा ये था कि जब उन्होंने उनके बारे में पढ़ा, तो कुछ बच्चे थे, वो आपने बीच में देखिएगा, उन्होंने सारों ने एक साथ कह दिया कि हम्म, ये जो जय भीम है, मतलब बाबा साहब हैं, he is based technically, एक बच्चे ने बोला टेक्निकली he is on the top level, अच्छा, मतलब top टेक्निकली most level। टॉप हाँ, मोस्ट। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि मेरिट टॉप में मेरिट। कुछ ब्राह्मण होता है टॉप में, और फिर दूसरा हाँ, क्षत्रिय एक, होता है। हाँ, ब्राह्मण हाँ, क्षत्रिय तो वैश्य। हमने उसको, टीचर ने ऐसे बताया कि टॉप लेवल होता है, 4 लेवल्स बनाए। तो वो तो कह रहे हैं कि ये तो ब्राह्मण से भी ऊपर है करके, ओके। क्योंकि उनको तो ग्रेट। टर्म नहीं यूज करते आता है। हम्म, तो हम्म, आज उन बच्चों को समझ में आ गई बात, हम्म, छोटे छोटे बच्चों को, विद इन 15-20 मिनट्स दे हम्म, रियलाइज, वो इनलाइटेंड हो गए कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है, ये तो आपका जो भी लेवल रहा होगा, ब्राह्मण या क्षत्रिय, हाँ, जो जो भी भी शुद्ध, है। ही इज नॉट फ्रॉम द फोर्थ ग्रेड, ही इज फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल, मतलब उनके भी ऊपर उन्होंने उनको रखा है। बताइए। हमने देखा कि वहाँ जो टीचर्स और जो बच्चे हैं वो बाबा साहब के सामने झुककर जय भीम कर रहे थे। क्या आपने उनसे कहा था कि ऐसे झुककर जय भीम करना चाहिए, कि वो खुद से ऐसा कर रहे थे? हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ पर ज़्यादा एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, इस प्रकार की बातें फैलाई जाती या प्रचारित किया जाता है कि पाश्चात्य सभ्यता ऐसी है वैसी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो कितने रिस्पेक्ट के साथ बाबा साहब को सैल्यूट कर रहे हैं या उन्हें सम्मान दे रहे हैं, जय भीम कह रहे हैं। तो उनको मैंने, जब उन्होंने मुझसे सबसे पूछा था कि कैसे विश करते हैं इंडिया में, अगर कोई अच्छा। इंडियन दिखे तो ऐसे कि हम लोग जय भीम कहते हैं, मैंने तो ऐसे खड़े होकर बोला था ना। बट व्हेन आई सॉ दैट द टीचर, इवन शी इज लाइक थोड़ा ऐसे झुक करके मुझे जय भीम के, आपने देखा होगा। और बच्चे हाँ, सारे अगर लाइन में आएंगे तो पूरे झुक के करते हैं, अगर वो बैठे हुए में तो आपने देखेंगे, मैंने देखा उनका रिएक्शन, वो अंदर झुक करके ही कर रहे हैं, और एक साथ कितना जोर से करते हैं जय भीम, जोश हाँ, के साथ में, जो उसके साथ। बहुत रिस्पेक्टफुली ऐसे है। और दूसरा आपने पूछा कि वो बाबा साहब के सामने क्यों करना चाहते, तो हाँ, एक बच्चे के मन में आया, हमारा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था कि हम उनका पिक्चर लेंगे उनके साथ में। ओके, ओके। आपने देखा है लॉरलाई, हाँ, उसने हाँ, जो है एक बच्ची, उसने हैंड रेज किया कि बोलती कि नहीं, मुझे मेरे जय भीम के साथ में पिक्चर लेना है। तो उसने बोली कि नहीं, सभी लोग बच्चे जाएंगे और इंडिविजुअल नील डाउन करेंगे। I was wondering if we could like all like stand, go to prayer, and like we all, one of us like each of us say, go up here and say Jai Hind. Good idea. So they want to come to Dr. B.R. Ambedkar's picture in front of him, and she is saying we'll all come in front of the picture and we'll say Jai Bhim to him. No, So nice of so you, like one Lord of us Lai. stand here and say Jai Hind. Yeah, to And front. then another person. Oh yeah, sure. Yeah, good idea.
Okay. कल्चर नहीं है कि वो किसी के पैरों में बैठे या कहीं नीचे बैठे, है ना। और वो तो हमेशा हमेशा ऊपर ही बैठते हैं, कहीं जाएंगे प्रेयर के लिए भी जाएंगे तो लेकिन उस बच्चे के मन में कैसे आए, मुझे इनके पास में बैठना है, नील डाउन करना है, और वहां हम इंडिविजुअल पिक्चर लेंगे क्योंकि ये हमारा लाइक काइंड ऑफ फीलिंग उनके मन में आई ऐसी। आपको नहीं लगता? मेरे को आई वॉज लिटरली इन टीयर्स जब उन बच्चों ने कहा कि हमको इंडिविजुअल लेने का है बाबा साहब के साथ पिक्चर। तो ये मैं तो नहीं कह सकती, और सभी मानव है आप लोग में, और आप खुद फील कर सकते हैं कि उनके बच्चों के मन में विद इन 30 मिनट्स जो भी है, उनके मन में बाबा साहब के लिए इतना प्यार आ गया। और जैसे ही टीचर ने पढ़ा था उसमें कि जब बाबा साहब 5 साल के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई, तो सारे बच्चे ओ करके ऐसे हाथ करके देख रहे हैं, आपका रिएक्शन देखिए, हाँ देखा वो देखा। रोने लगे। हाँ। और एक बार जब किसी बच्चे ने ये भी पूछा, उनका ऐसे इम्पैक्ट देखिए, वो खुद ही सोचने लगे, जब उनको पता चला कि इनको तो पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, ऊपर से पानी पिलाते थे, वो सारा पिक्चर मैंने दिखाया है उनको। तो वो एक बच्चा है, उसने पूछा कि उनको तो वो फिजिकली अब्यूज भी करते होंगे। अच्छा, बच्चे के तो दिमाग में ये उसके बात आ दिमाग में कैसे मन में आ गया? मैंने तो प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाया कि हमको दे टू बीट अस, और शायद हमारे साथ लोगों को मारते भी थे ना, शायद हाँ, मारते मारते भी थे। थे, बिना वजह भी मारते थे। हाँ, तो प्रताड़ित। उसके मन में ये बात कैसे आई? ये क्योंकि सोचने की थोड़ा बात। सा आप बता दोगे तो उनको पूरी बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो समझ जाते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ होगा। लेकिन हमारे भारत के लोग तो समझ ही नहीं पाते। और हमारे भारत के खुद एक्सपीरियंस किया है उन्होंने, हाँ। उनके मन में दया करुणा नहीं है कि किसी हम्म, को टॉर्चर करना क्या है। तो यही मैं कहती कि जितने हमारे लोग हैं, जितने लिटरेड हैं, बट दे आर ऑल अनएडुकेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। सही लिटरेट तो कह। कोई भी बन सकता है, पैसे देके आप स्कूल में जाओ, डिग्री ले लो, पढ़ लो। हम्म लेकिन एडुकेट होने के लिए, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, हम्म। एडुकेट होने के लिए आपके पास में मन में मानवता होनी चाहिए और क्लियर माइंड होना चाहिए। ये बच्चों का हार्ट बहुत प्योर है, क्लियर है, इसीलिए वो अगर उनके ऊपर में आप कुछ गलत बात थोपोगे तो उनके पास में इतना दिमाग है कहने के लिए कि ये सही है और ये गलत है, वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। कौन सी ये क्लास के इम्पैक्ट बच्चे उनके थे? ऊपर में पड़ा है। कौन वो सी लोग क्लास? 3rd ग्रेड के हैं, थर्ड 3rd ग्रेड? ग्रेड के बच्चे हैं। और अभी तो इतना हो चुका है, जैसे ही उनको मैंने बताया कि मैंने लिए, और मैं कुछ प्रिपेयर्ड नहीं थी, मैंने कहा चलो मैं वीडियो ले लेती हूँ ऐसे करके, और मैंने फोन से ही बनाया। तो आई एम सॉरी नहीं ऑडियंस, नहीं। जो भी स्पेक्टेटर्स हैं, कि आपको बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आया, लेकिन उनकी जो सोच है वो आपको समझ में आ गई। और एक जो हमने सीड सो किया है उनके अंदर में, बाबा साहेब का, जय भीम का, वो हम्म, एकदम अभी फ्लोरिश होने वाला है। आप चाहते हैं ऐसा हो, आपको खुशी अगर हो रही है कि हम्म, बाबा साहब के बारे में उन लोग इतना एक्साइटेड है, तो आप जो भी लैंग्वेज में आपको आता है, साउथ की, जिसकी, पंजाब की, आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने जो भी है कमेंट्स, तो उस चीज को ट्रांसलेटर आता है उसी में। ओके। हाँ। जैसे मैं है, मुझे नहीं समझ में आती थाई लैंग्वेज, बट मैं ट्रांसलेटर में जाती हूँ, वहीं पे ट्रांसलेटर एक टैब होता है, तो उसको हम लोग हिट करते हैं तो हमारा जो भी लैंग्वेज, इंग्लिश में सारा कुछ आ जाता है। ओके। तो अगर आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप अगर लिखेंगे तो पेरेंट्स भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, टीचर्स एंड ओके। प्रिंसिपल ऑल विल रीड दिस, और हाँ कि पूरे लोग उसको देखेंगे। तो और आप जिस भी कंट्री से, हाँ, जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं और करे, प्लीज डू मेंशन दैट वेदर यू लाइक इट और नो, एंड या हाउ मच यू लाइक इट, एंड लाइक जो भी है, और अपना कंट्री का नाम ले लिखिए, अपना स्टेट का नाम लिखिए, तो इनको भी, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज आपने 30 मिनट में बाबा साहब के जीवन संघर्षों को बताया, और वो बच्चे देखने में काफ़ी छोटे लग रहे थे, और वो बता रहे हैं कि बाबा साहब को 11 भाषाओं का ज्ञान था। मैंने तो बादल सर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, और इवन टीचर ने भी नहीं बताया। तो कैन यू इमेजिन कि वो खाली बोर्ड देख रहे हैं, वो बैठे हुए नहीं है। तो कि मेरे स्लाइड शो प्रेजेंटेशन चल रहा था, तो उसी समय जो है उन्होंने देख लिया था कि वो 11 लैंग्वेज है करके। तो ओके। कितना माइन्यूटली वो पढ़ रहे थे, यू कैन इमेजिन। जी 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 मतलब जी। कितना फोकस थे वो प्रेजेंटेशन के ऊपर में बच्चे। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने वहीं से आंसर कर दिया पढ़ करके कि ये है। और जब उन्होंने पिक्चर्स देखे कि इनके साथ में ऐसे होता था, तो दे फील वेरी सैड। और दूसरा बच्चा है, उसने कहा कि एक तो इस तरह से जो बन रहा था कि उसका बच्चा को आपने बोला कि अनटचेबल है, एंड देन हिज चिल्ड्रन केम एंड दे आल्सो कंसिडर्ड हिम एज अनटचेबल। तो बोलते हैं वो एक फैमिली ट्री बन गया था आपका, कि कोई अच्छा भी कर रहा है तो वो अच्छा नहीं, उसको, उसकी जो अच्छाई है उसको सामने नहीं आने दे रहे। दूसरा और एक बच्चा, उसने यही बोला था कि वो
ये ऐसे कर दिया था कि जो दब रहा है उसको और ज्यादा दबाया गया है। उसने ऐसे क्वेश्चन किया है कि ऐसे किया जा रहा है। और आई थिंक उसने ये भी बोला कि जिसके पास स्ट्रेंथ थी और जिसके पास प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने ऐसे सेग्रीगेट किया, उसको अपनी तरफ खींचा और कैसे मैनिपुलेट किया। ये बात उन लोगों ने मुझे बताई। वीडियो में तो नहीं है लेकिन बाद में भी उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों ने मैनिपुलेट किया है करके। मैंने कहा आप इतने छोटे बच्चे हैं, आप इन लोगों को कितना जल्दी समझ में आ गई ये बात। मैडम आपने काफ़ी महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं आपसे चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ देखें और इसे शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद। The very basic level was the poor level. And it was based on where you were born and how you were born, like where you were born, or your skin color. No, nothing was like that. Who in For your somewhere, family? somebody like just made up. Someone just yeah, said you just were to here. manipulate the thing, how he wanted to work the Yeah. things to go like that. And then he said he divided people in 4 different parts. Before we all were same equal. But somebody, they invaded in our country and they did this partition They took of it the 4 level. Yeah. And it's So called- they were sitting on the top level and then the other 3-4 levels they divided us depending on our strength. Okay. Yeah, and Your our property. strengths. Yes. Oh, and your property. Yeah. So Okay, who so- has more? So this is how they made 4 levels The 4 of that. levels. And almost 80% people belong to this community where I come from. Oh, the lower. Yeah, lower. we have the most people. And because we were very innocent, we could not lift up the arms, we could not fight with them. So like we became slave kind. Oh, kind of like slavery. So on the bottom level, if you were on the bottom level, you couldn't get the food. Remember the people at the top level, they would have the farms and the harvest, and you couldn't, if you were at the bottom level, you couldn't get any of the food. They would take all of the food. And if they went to buy clothes on the top level, they would get nice, clean clothes. And what do you think would happen with the bottom level? What do you think happened, Kellen? You would get the clothes. You would go. Excellent. You would try to go buy some clothes, and you would get dirty clothes. And what do you think about going to school and education? What about the people on the bottom? Probably really bad, and they probably didn't get to learn the things that we get to learn today. Exactly. And could you move up if you were stuck in the bottom level? Could you move up any of the levels, Avon? No, you couldn't, because if you were born weak, based on your strength and property, you have to stay that way. Good job. Excellent. Stephen R. And I think they would probably hit you too if you were down there. Ooh, yeah. Do you think they might abuse you? Yeah, I think they might abuse you, would they? And then you weren't respected. Yeah. You couldn't even touch other people. So if you were on the bottom level, I feel like there would just be a wall and different people. and people on the top level, they had everything. They were like the kings. And they would tell you what to do. Yeah, and boss you around. Izzy. How many people were at the top level? 80, did you say that the 10%? Top level only 2%. Top level is 2%. Yeah, What first about the level. next level down? Next, like we were the lowest one was 80%. So then top level is 2%, and then 6%, 10% like that. So the biggest Population. one was the lower one. And then all the rich people, the small amount of people at the top, they had all the money, they had all the toys, they had all the, oh, thank you, they had everything. Stephen R., did you have a question? Not Stephen. Stephen O. So, when you get born on the top, the low level, I think that when your child gets born, then your child has to stay down there, and so has the rest of your family tree. Exactly. Your whole family tree would have to stay on that level. Forever. Okay, let's scoot over a square. So Thank you. nowadays you can go to school and you get more educated, and then you can get a better job than your parents, Alisea, and you might be able to even make more money than your family. When I was born, my family was pretty poor, so my family would have been on the lowest level. But then, Messiah, I went to college,
And then I got a really nice job. I went to 2 colleges. I got a nice job. Then I started making more money, Messiahs. And now I have more money and I can do anything that I want. Isn't that just awesome that we can be able to do that? We have that freedom and that opportunity. Well, that's what this guy, he was so cool. He said that nobody should be stuck at that level. They should have the opportunity to work hard, think about what they want to do, break out of that caste system, and move on up so that they could be at the top level too. Would you want to be stuck at the bottom? No. Would you want to go to school so you could move up and be at the top level? Yes. Well, that's what this guy did. He changed everything, just like Martin Luther King Jr. did in America for the African American people. This guy did the same thing. They worship him and they have such a great day. They celebrate him and all of his hard work and his precious words. And he was such a good leader. He broke everybody out of that system, and now it's different. Just like everybody, they can come and they can build up and go up and move up the different levels. So let's look at him a little bit deeper. Can we go through the slides? Let's go through the slides. Hold up. We have so many slides. So he was born in 1891 into a Mahar caste, which was treated as an untouchable. I bet you can think about what that means. A group of people, and they were faced with social and economic discrimination. So socially, they couldn't go where they wanted to go. They were discriminated against. He was the youngest of 14 children. Whoa, that means he had 13 siblings. So what happened? Sorry. We had the children's, but because of due to malnutrition, they didn't have food or anything, no medication. They used to die. They could not survive. Because they didn't So get this was- medical attention. Even if you were sick and you were on the bottom, you couldn't get medical attention. If you were sick, you just had to stay home and they couldn't even help you or take care of you. It was so awful. His father was a Sudabar in the British Army. Wow. His mother, she died when he was only 5 years old. That's so sad. His entire life, Kids are so sad. his entire life he was marked by struggles from discrimination and humiliation. They could say mean words to him by the upper caste of the Hindu people. Sit crisscross and I might call on you. His early school life, he was faced with severe segregation. He had to go to a school that wasn't as nice as everybody else's school. You're really lucky here. You get to go to a nice school. He had to go to a school where they didn't have paper or pencils or books. It was really hard for him to learn and to focus. He was denied simple necessities. They didn't have drinking water. They didn't have anywhere that they could sit. They had to wait for all of these things. Someone had to pour the water from a distance out of fear, out of touching him. So if you wanted a glass of water, someone would have to pour it far away from you. Then they would move. Then you could go get your water. Isn't that so awful? How do you feel with that? What do you guys think about that? I feel sad about them. Tell us. I'll call on you. Go ahead, Lorelai. I feel sad about them because us now are really lucky that we get to have a drinking fountain. And I feel sad for all the people who was on the bottom level, and I'm happy that he did that for them. Thanks for having Are you happy that Dr. B. Ambedkar did for them? Lexi, what are you thinking? I agree with Lorelai because it's really sad how they used to didn't believe they had to pull the waterfall away from them, and it took them a while to, and if they were really thirsty they probably couldn't move that much, Good. so they had to try to go, but they couldn't. Thank you. They didn't even have books or pencils. They had chalkboards, like a little chalkboard. And that's correctly. He solved math questions that even the teacher could not solve. He was so smart. He was smarter than his teacher. What? He could solve problems that his teacher couldn't solve. He was just born that way. He was born that smart. Isn't that crazy? He should be at the top level. Yeah. And the teacher told him. See again, he should be on the top. So after
I have a little story. After he wrote the answer down on the chalkboard, Matson, he had the chalk, and he wrote the answer on the chalkboard, and the teacher told him to throw the chalk away since he was impure. The teacher couldn't even touch the chalk after he touched it. Isn't that so sad? That would be like me telling you to throw the pencil away because you had touched the pencil. I could not touch the pencil. So sad. And then they would have to wipe the whole place clean. So say one person came in here, and after they left, we said, oh, they have been here. They are so dirty. We have to clean everything because they just came here. So sad. Lena, do you have a question? Yeah. Why were people not wanting to touch him? Because he was on the lowest level of the caste system. And they said that that's where he was born, that they couldn't touch him. And somebody, he made this caste system, not the nature. So can you imagine what kind of a person he made this? Yeah. He used to study until 10 p.m. and his father would sit awake. So this is where we learn about how hard he worked. He worked so hard from 10 p.m. to 4 a.m. in the morning. They would wake him up to study. After 4 a.m., his father would go back to sleep. He was extremely intelligent and determined and kind-hearted. And he was very focused, even in his childhood. Like some of you, you work so hard every day, just like this guy. He was amazing. We're all born the same way. We look the same. The sun gives us an equal amount of sunlight to all of us. The moon, air, and nature, that does not discriminate between us. Then who has created this upper caste system and this lower caste system? These are questions that he asked himself, and he wanted to fight against it. I will make laws that protect equality amongst all and give the right to education for everybody to live in dignity for all the people. Who hasn't talked yet? Ruby. I think that that's where he kind of like started to work harder on trying to save the people. Good job. Awesome. It's hard with that in your face. So he had these ideas. He was super smart, and he got himself educated. I think this is how he started out with his greatness. He loved books and learning, and he always worked hard to get good grades. He got awards and scholarships. Scholarship is like money so that he could go to school. He got his degree in economics and political science. So that's about money and the government. He started learning all about that. He went to England to study, and he studied at London. So he traveled. That's so cool, to travel. I think that expanded his mind. He read thousands of books, and he wrote a lot of papers. Do you guys write papers? Yes. Yeah, you haven't written any books yet, but maybe you have. I don't know. He wrote a lot of books. Guess how many languages he knew? 11 different languages. Whoa. And he had, look at that, he had 32 degrees, Alizeo. That means when he went to college, he got 32 different degrees and 4 doctorate degrees. Whoa. Some people only have 1. So now he was working at the government law in Mumbai as a professor of political economy. Other students refused to learn from him. Even though he was so smart, they knew he came from the lower caste system, so they didn't think his ideas were important. He was appointed the ruler of Vadodara as a probationer to the accountant of the general's office, so he was in charge of the general office's money. The upper caste subordinates, the people that worked there, they wouldn't listen to him because he was from the lower caste system. So they wouldn't follow anything. And they would throw his files. They would throw his files on the table from a distance. They wouldn't even hand him a piece of paper because he was from the lower caste system. He was not allowed to drink water from the same pot like the upper caste system and employees in the office. That kind of reminds me of, remember before Martin Luther King, the African Americans couldn't drink from the same water fountain as the white people. Isn't that sad? And he fought against this. His 2 sons and his daughter died. Isn't that so sad? And they didn't inform him about their child's death because they didn't want to disturb him.
Could you imagine if you had died and they didn't even tell your parents that you had died yet? Dang. So sad. Kira, you want to say something? I wonder how long the caste system was held for. How long it was in place? Do you know, Aruna? 5,000 years. 5,000 years. We were suffering like this till he came. Dr. Ambedkar 5,000 came. years. That is amazing. That's like So when his son died, they didn't have enough money to cremate him. He didn't have enough money to do his cremation. Wouldn't that be so sad? If your family was so poor they couldn't bury you. There were community struggles. The lower caste system could not drink water from the same place that they would let the animals drink from. So the animals were even above the lower caste system. They weren't allowed to go to school. They couldn't wear brand new clothes. Caste people were forced to live outside of the cities and the villages, so they had to walk really long distances to get what they needed. The places that they lived were not taken care of, and they were underdeveloped, and their houses weren't nice at all. The barbers would cut the hair of the animals, but they would not cut the hair of the lower caste system. They would say, you're so low on the caste system, I'm not even going to touch your hair. So sad. Yeah, How do you Kelly. feel? I know why when he was younger he had to pour his water because I think the teachers were upper, so that's why they couldn't touch him because he was lower, and the teachers were upper. That's how he had a job. The Good teachers had a job. understanding. Izzy. How did his children die? I don't know. Maybe I'm Aruna sorry. knows. Sorry, what was the question? How did his children die? Because they didn't have money. He was educated, but the people in India, they were not giving him job. And wherever he used to work, they used to trouble him, torture him so much so that he had to leave the job. So he had no money. And he was working only for his community. So his wife said, if my children are died, no problem. You have to take care of billions of children. So go and study. This is how his wife sacrificed her life and her children. And eventually, after a few years, his wife also died because she didn't have medication proper and food. So he could have got a better job, right? Like how we do for ourselves. But he never thought of that. He thought for others, how to bring up them. Was he the only one in his family that survived? He and his one son, the oldest son. Only 2 people survived. His father also died very early. So, Aruna, we have a couple more minutes. Are there some other slides that are really important to you that you would like me to go through? And then we'll not take any questions. Okay, this one? Did you know that under the rule of Marathas and the Peshwas, Yeah, it's in Mumbai. Mumbai, in Africa? Mumbai. Oh, no, not Mumbai. Not Mombasa, No. Mumbai, in India. Mumbai, that's right. The Okay. Bollywood. Yeah. The Hindu should be polluted by touching it with his foot, but had to hang an earth pot around his neck to hold his spittle, which is your spit. He was made to drag a thorny branch of a tree with him to brush out his footsteps. And when a Brahma man came by, he had to lie at a distance on his face. Whoa, lest his shadow might fall on the Brahman. Isn't that sad? Just persecution. Did you know under the rule of Marathas and Peshwas, the untouchables were not allowed within the gates of the Pune city, the capital of Peshwas? Am I saying that correctly? Yes. Between 3 p.m. and 9 a.m. Because before 9 and after 3 their bodies cast too long of a shadow, and whenever their shadow fell upon Brahman, it polluted him, so that he would dare not taste food or water until he had bathed and washed the impurity away. Did you know in Maharashtra, Maharashtra, Mumbai, an untouchable was required to wear a black thread either in his neck or on his wrist for the purpose of a ready identification. In Gujarat, the untouchables were compelled to wear a horn as their distinguishing mark. So they had to wear a horn.
Can you see them right there around their necks? It's an indication that he's coming, so he used to put the horn. The upper caste person will not cross from there. Oh, to let them know that he's coming. Yeah. The Punjab sweeper was required while walking through streets in towns to carry a broom in his hand or under his armpit as a mark of his being a scavenger, the lowest class. In Malabar, the untouchables were not allowed to build houses above 1 story in height and not allowed to cremate their dead. That's like they couldn't bury their dead. In Malabar, the untouchables were not permitted to carry umbrellas, to wear shoes or golden ornaments, to milk cows, or even to use the ordinary language of the country. In South India, the untouchables were expressly forbidden to cover the upper part of their body above their waist. In the case of a woman, who wore clothes to cover themselves. Can you imagine how uncomfortable that would be? In Bombay, the untouchables were not permitted to wear clean or untorn clothes. In fact, the shopkeepers took the precaution to see that before the cloth was sold to the untouchable, it was torn and soiled. Can you imagine going to a store and they just tear your clothes? Well, so he decided he wanted to build a fair society. He made sure that there were laws there to protect everyone, especially the weaker and marginalized groups. His work led to rules that stopped unfair treatment of any community. Wow, so he started changing everything. He believed all children should go to school, no matter what their background is. And I'm going to let everybody pick a prize. She wants to say something. Today. I was wondering if we could all say, go to Penguin, we all, one of us, each of us go up here and say JB. Good idea. So they want to come to Dr. B.R. Ambedkar's picture in front of him, and she is saying we'll all come in front of the picture and we'll say Jai Bhim to him. So nice of you, one Lord. will stand here and say JB. Yeah, to front. Another person. Oh, yeah. Sure. Yeah, good idea. Okay. This recording is If on. you would like to, you can go up in front and kneel down in front of the picture. Kneel of him, down, and we'll yeah. all say Jai Bhim. Yeah. Only if you want to. You don't have to. one at a time. Kneel down. One at a time. She wants to do one at a time. They love him so much. One at a time? Okay. No, we don't have We time. have We don't have time. We have to move on to We have Nada. to bow down. I would go to it. Sit down. Everyone come quick. Everyone. Guys, come on. Wait, Steven. no, it's okay. They don't have to do it if they don't want to. It's okay. You guys want to do it? No, they didn't understand actually. You want to do it? All right, ready? 5, Standing up in the back. 4, 3, You also have that. 5, 4, 3, 2, 1. Jai Bhim.